आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमान डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। रिमान डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में ही चल रहा है टॉपिक। तो रिमान डेफिनेशन, so we write down the definition as let fz be a continuous function of the complex variable z which is not necessary analytic but which have some definite value, definite finite value at each point of rectifiable arc C with endpoints A and B. So let the equation of arc z equal to पैरामीट्रिक इक्वेशन अज्यूम कर रहे हैं एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी। तो वेयर टी लाई बिटवीन अल्फा टू बीटा, so we divide the arc into n equal parts, n portions by using the points z naught, z1, z2 and so on zn. So where जो इनिशियल पॉइंट होगा हमारा z नॉट विच इज इक्वल टू a और एंड पॉइंट होगा zn विच इज इक्वल टू b। तो अब हम इसको शो कर सकते हैं किस तरीके से हमने जैसे इसको लिया है। ये कोई हमारा रेक्टिफिएबल आर्क है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, इसको हमने कंसीडर किया a और दिस पॉइंट वी कंसीडर एज b। नाउ a वी राइट डाउन एज z नॉट, सो ये z नॉट है। यहाँ कोई पॉइंट z1 होगा, ये कोई पॉइंट z2 है, यहाँ z3 पॉइंट होगा और ऐसे ही आगे z4 होगा। यहाँ पर हमारा पॉइंट ले लिया हमने ZR-1 और ये पॉइंट जो होगा वो ZR होगा। आगे ZR+1 होगा और एंड सो ऑन, यहाँ पर जो B होगा वो क्या होगा, ZN होगा। ओके। अब एक पॉइंट हमने लिया कोई जो कि जीटा आर बी एनी पॉइंट विच लाई बिटवीन ZR-1 टू ZR, ZR-1 टू ZR। तो नाउ जीटा आर बी एनी पॉइंट इन द आर। अब ये पोर्शन है आर्क के और वो हमने लिया है ZR-1 टू ZR। तो जो सम ऑफ इंटीग्रल होगा, सम ऑफ इंटीग्रल दैट मीन्स वी राइट डाउन दिस इज ए कर्व सी, so this is a curve C, so then integration along a curve C fz into dz which is equal to, we write down
the sum, consider the sum of the integration, that means the portions हमने लिए हैं. So we write down this as limit n tends to infinity summation of r equal to 1 to n function of zeta r or into del zr into del zr delta zr. Delta zr basically the difference. So we write down the limit n tends to infinity. So summation r equal to 1 to n function of zeta r, or this we can write down as z r minus zr minus 1. So zr minus zr minus 1. So if we can take this arc or the point zr which lie between this arc zr minus 1 to zr. So this is known as the Riemann definition of इंटीग्रेशन. अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है हमारी, तो जैसे हम फर्स्ट वी टेक द प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1. इफ सी बी एनी रेक्टिफिएबल आर्क, सी बी एनी रेक्टिफिएबल आर्क joining the points, joining the points z equal to a and z equal to b, prove that integration along a curve c dz is equal to b minus a, dz equal to b minus a. So here we do the solution of this. अब सॉल्यूशन करने के लिए कोई भी रेक्टिफिएबल आर्क ले लिया हमने. इस तरीके का कोई आर्क है हमारा रेक्टिफिएबल आर्क. तो ये दिस इज द पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारा बी दे रखा है. नाउ सी बी यानी आर्क विच इज गिवन है. अब इसमें देखिए एलएचएस पार्ट है, यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रेशन. सो गिवन इंटीग्रेशन अलोंग ए कर्व सी इनटू डी जेड. और बेसिकली ये फंक्शन क्या होता है अलोंग ए कर्व सी एफ जेड इनटू डी जेड. सो वी हैव इंटीग्रेशन अलोंग कर्व सी एफ जेड इंटू डी जेड. तो जो एफ जेड की वैल्यू होगी यहाँ पर क्या है. सो हियर वी सी दैट एफ जेड इक्वल टू 1. तो इसमें यही कहा रिमान डेफिनेशन है, फंक्शन एनालिटिक नहीं हो कोई इश्यू नहीं है, बट फंक्शन क्या होना चाहिए विच इज नॉट नेसेसरली एनालाइट बट विच इज डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू. तो हैव सम डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू. सो एफ जेड इक्वल टू 1. सो दिस ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन which is continuous, which is continuous. फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्यों, कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा. तो कंटिन्यूस होगा तो इट मींस दैट वी कैन से दैट एफ जेड और डी जेड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. फंक्शन इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट करेगा तो वी कैन यूज द रीमान डेफिनेशन. तो बाय यूजिंग रीमान डेफिनेशन, so by using Riemann definition, so we can write down as C f z dz integration. So this equal to we have limit n tends to infinity summation of r equal to 1 to n f of zeta r or zr minus zr minus 1. So this equal to we can write down as limit n tends to infinity summation of r equal to 1 to infinity f of zeta r. zeta r क्या है यहाँ पे, जो फंक्शन एफ जेड है इक्वल टू 1 दे रखा है और जेड को रिप्लेस करेंगे जीटा आर से तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 और क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट दे रखा है. सो दिस इक्वल टू जेड आर माइनस 1. नाउ सो वी राइट डाउन दिस एज लिमिट n tends to infinity. So n tends to infinity when we open the summation. So by putting the value of r equal to 1 to infinity. तो जैसे फर्स्ट वैल्यू हमने r इक्वल टू 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा z1 माइनस क्या हो जाएगा z0 और प्लस अगला टर्म आएगा z2 माइनस z1 और प्लस z3 माइनस z2 और प्लस एंड सो ऑन. और जो लास्ट टर्म आएगा हमारा क्या आएगा zn माइनस z n माइनस 1. और इससे जो प्रीवियस टर्म होगा वो भी zn माइनस 1 होगा प्लस का.
तो ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, जैसे जेड वन से जेड वन कैंसिल हो जाएगा, जेड टू से जेड टू कैंसिल हो जाएगा, तो जेड थ्री भी कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव ओनली टू टर्म्स। और वो दो टर्म्स क्या होंगे? सो द टू टर्म्स विल बी जेड एन माइनस जेड नॉट। सो दो टर्म्स होंगे हमारे जेड एन माइनस जेड नॉट, और जेड एन माइनस जेड नॉट। और जेड एन क्या है वहां पर? जेड एन क्या होगा हमारा? बी होगा। और माइनस जेड नॉट क्या होगा? ए। तो दिस विल बी बी माइनस ए, क्योंकि सी क्या है हमारी? सी इज द क्लोज्ड कर्व। सो ये तो पहला पार्ट प्रूव हो गया हमारा, जैसे बी माइनस ए अगर हमें प्रूव करना है, सो दिस विल बी बी माइनस ए। बट अगर हमें जीरो प्रूव करना है इंटीग्रेशन, सो वी कैन से दैट इफ सी इज द क्लोज्ड कर्व, अगर सी कोई क्लोज्ड कर्व है, सी इज क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व में क्या होगा? इनिशियल जो बिगिनिंग पॉइंट होगा वही एंडिंग पॉइंट होगा क्लोज्ड कर्व में। तो हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा उस केस में? बी हो जाएगा। इनिशियल और एंडिंग पॉइंट सेम होंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनिशियल एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम। एंडिंग पॉइंट्स आर सेम। जब इनिशियल और एंडिंग पॉइंट सेम होंगे, तो ए इक्वल टू जैसे बी हो जाएगा, तो इसी में जब पुट कर देंगे, तो सी और एफ जेड इंटू डी जेड, तो एफ जेड तो वन है ही है, तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। तो ये आंसर आ जाएगा। अगर बी माइनस से सॉल्व करना है तो वी कैन सॉल्व बी माइनस से एज, so dz equal to b minus a when we have rectifiable arc or that arc is a closed curve, so then we can say that integration c along a curve, so dz equal to zero. Now सिमिलर एक सेकंड क्वेश्चन भी होगा इसका, तो सेकंड क्वेश्चन भी हम कर देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में है कि evaluate क्वेश्चन नंबर टू। evaluate line integral c z into dz where c is a curve running between C is a curve running between the point z equal to a and z equal to b. So now अब इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है, और आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से भी दे रखा हो सकता है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन along with curve c z dz equal to 1 upon 2 b square minus a square। और क्लोज्ड कर्व के लिए भी दे सकता है कि बी क्लोज्ड कर्व के लिए, और फॉर वी कैन राइट डाउन एज फॉर क्लोज्ड कर्व के लिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। सी भी क्लोज्ड कर्व, so integration along a closed curve c z dz equal to zero. So first we shall prove the first part, then तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए लेट आई, वी कैन अज्यूम द इंटीग्रेशन सी और एफ जेड इंटू डी जेड, एफ जेड इंटू डी जेड। तो अब यहाँ पे जो देखते हैं कि एफ जेड क्या है हमारा, तो हियर जो एफ जेड है, एफ जेड इक्वल टू क्या है? जेड। एफ जेड इक्वल टू जेड। सो नाउ बाय यूजिंग रीमान डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय यूजिंग रीमान डेफिनेशन, और रीमान डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं इसको? तो आई हमने अज्यूम किया इसको, तो आई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ जीटा आर इंटू जेड आर माइनस वन। जो फिगर चल रहा है वो तो सेम फिगर आपको होगा, जेड आर कोई पॉइंट पॉइंट होगा आर बिटवीन द आर्क जेड आर और जेड आर माइनस वन। तो नाउ अब एफ ऑफ जीटा आर, अब जीटा आर जो जेड को रिप्लेस करेंगे जीटा आर से, तो दैट मीन जेड है फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड, तो जीटा आर हो जाएगा। तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज
limit n tends to infinity, summation of r equal to 1 to n. So the value of this function is zeta r, or that can be written as zr minus 1. Now we assume or we consider that जो जीटा आर पॉइंट है वो हमने अज्यूम कर लिया दैट पॉइंट इज जेड आर, दैट पॉइंट इज जेड आर. So now what is the value of I? So I can be written as limit n tends to infinity, summation of r equal to 1 to n zr, और here zr minus 1. तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1. और अगेन फिर हमने लेट किया, अगेन लेट जो जेड आर इक्वल टू जेड आर माइनस 1, जो जीटा आर इक्वल टू जेड आर माइनस 1. तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, summation of r equal to 1 to n, or this can be r minus 1 zr minus 1. So this is the equation number 2. Now adding 1 and 2. अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. जब दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू, तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n. अब ये दोनों कॉमन है तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, zr plus zr minus 1, और ये जो कॉमन आ जाएगा zr minus 1. So now this we can write down as limit n tends to infinity, summation of r equal to 1 to n, or a plus b or a minus b. So this can be written as zr square minus zr minus 1 to the whole square. Now अब इस समीशन जब ओपन करेंगे, so this can be written as r equal to 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा z1 स्क्वायर माइनस z0 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन. लास्ट टर्म वही zn स्क्वायर माइनस zn-1 टू द होल स्क्वायर. तो ये सारे टर्म कट जाएंगे, z1 स्क्वायर टू z1, z2 स्क्वायर भी कैंसिल कट जाएगा. तो दिस वी कैन राइट डाउन एज zn स्क्वायर माइनस z0 स्क्वायर, और zn स्क्वायर माइनस z0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू zn क्या है, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो दिस इक्वल टू 2i. So here the I value will be 1 upon 2 b square minus a square. So I equal to 1 upon 2 b square minus a square, और I क्या है, इन लाइन इंटीग्रल along the curve C f z into dz. तो f z क्या है हमारे यहाँ पे, z है, तो z into dz. तो we write down as z into dz is equal to 1 upon 2 b square minus a square. और ये कब यूज कर रहे हैं हम, ये यूज कर रहे हैं when A and B are distinct, मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं. A and B are distinct. और जब A equal to B है, when C is a closed curve, when C is a closed curve, अगर C closed curve है तो इनिशियल और बिगनिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट होगा तो सेम होगा. तो दैट मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल along a closed curve C और z into dz is equal to 0. तो ये क्लोज्ड कर्व. So hope you understand both the examples.